जय गंगे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत स्पेशल, बहुत ही खास कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर कोई रहना भी नहीं चाहता, कोई रह ही नहीं सकता। और आज की डेट में सबसे बड़ी परेशानी भी वही है। मैं बात कर रही हूँ फोन को लेकर। आप मुझे बताइए, आपसे कहा जाए कि आप 1 घंटे के लिए अपना फोन कहीं और रख दीजिए और आपको फोन नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका रिएक्शन होगा, क्या बात कर रहे हो, फोन, और वो भी 1 घंटे के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति के बिना रह सकते हैं आज की डेट में, लेकिन फोन के बगैर नहीं रह सकते। और तो और छोड़िए, हद तो तब हो जाती है जब माता पिता की आज के वक्त पे ये प्रॉब्लम होती है, या यूं को उनकी शिकायतें आती हैं कि मेरा बच्चा हमसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है फ़ोन पर। तो आज के वक्त पे ये फ़ोन एक एडिक्शन ही हो चुका है। आया तो था ये हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आया तो था ये हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए, लेकिन आज के वक्त पे ये एक प्रॉब्लम ही बन गया है। तो इस एडिक्शन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आइए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। साध्वी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये लोग बात ही क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त पे फ़ोन। ज़रा सा कुछ होता है तुरंत फ़ोन। और आजकल तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हो गई हैं, सोशल नेटवर्किंग इतना ज़्यादा फैल गया है कि हर चीज़ फ़ोन पे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन पेरेंट्स को लेकर जो चारों कोनों में आपको घर के चारों लोग पाए जाएंगे, एक उस कमरे में फ़ोन लेके, एक उस कमरे में, एक उस कमरे में। बच्चों को माता पिता से बात करने सुबह से शाम हो जाती है। ये एडिक्शन कैसे जाएगा? ये सचमुच the major challenge of today. पहली बात है, we cannot rewind life. हम पीछे हट नहीं सकते. We cannot be back at a time when we don't have phones. लोगों को लगता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे अगर ये फ़ोन नहीं होते कितना बढ़िया रहता. Unfortunately, it is useless talk because we cannot rewind life. होते ही नहीं है. We cannot undo technology and inventions. So this technology is here to stay. अब हमें ये देखना है कि ठीक है, technology is here. But does that mean that we have to be slaves to the technology? No. देखो, अपनी फ़ोन एक टूल है. In many ways it has made life very easy. कहाँ पहले कंप्यूटर पे बैठना पड़ा काम करने के लिए, अब जहाँ जहाँ जाते हैं फ़ोन हाथ में है, फटाफट उसका देखा, उसकी आंसर किया. It's made things easy. However, in that easiness, we have lost. We've lost a lot of what actually makes us human. In this machine, हम खुद machines बनने जा रहे हैं. We are losing that human connection. We are losing freedom of our mind. आपने एक अच्छी बात कही कि क्या एक घंटे के लिए आप अपने फ़ोन के दूर रह सकते हैं. अभी कुछ साल पहले, मैं ये मे भी 10-12 साल पहले के आसपास, अमेरिका में मैं फ़्लाइट में थी. और फ़्लाइट की मैगज़ीन्स में वो काफ़ी सारे जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स होती है, अलग अलग पजल्स होती है उसमें. So I don't do crossword puzzles, but there is a different puzzle of vocabulary words. And what they do is they give you a new word, and then they give you options of iska matlab kya hai, and you have to figure it out. So the word was nomophobia. Now, I'm a psychology student, तो मुझे इतनी मालूम है कि phobia का मतलब a very deep fear, a fear that paralyzes us. If we have a phobia of something, it means कि उसी fear से I am
paralyzed. Just say a fear of heights. I cannot go in heights. Fear of closed spaces, claustrophobia. No, means I cannot go in elevators. It absolutely paralyzes me. It makes me unable to live my life. That is what a phobia is. But all of the answers, whoever wrote the quiz was smart. All of the answers were a paralyzing fear of this, a paralyzing fear of that. Though, मैं सोची थी नोमो क्या मतलब, नोमो क्या, मैं figure out नहीं कर पाई. So I went to the back of the magazine जहाँ सारी answers है. And the answer is, nomophobia means the paralyzing fear of being without a working mobile phone. Oh. या phone हाथ में नहीं है, या phone का battery Down. खत्म हो गया. A new actual word in the dictionary, a new pathology, a new illness that you can be diagnosed with is this fear of being without a working mobile phone. अब ये पूछो, क्या हम phones को use कर रहे हैं या phones हमको use कर रहे हैं? We have become slaves. Now, there's many reasons for this. I won't go into all of them, but in our brains, we have a lot of different chemicals in our brains. They're called neurotransmitters. Usme se one of them is called dopamine. Dopamine gets referred to as the reward chemical. When we do something that gives us pleasure and a reward, we get dopamine, and it feels good. Okay. And that's why we keep doing it. Now, every time you check your post and there are more people who have liked it, you have more friends, more followers, every time you do that, you get a hit of dopamine. So we are not just addicted to the phones, we've become addicted to these micro hits of dopamine all day long. And that's what drives us. Abhi 2 minute pehle maine check kiya tha, but it drives us to check it again and again and again कि शायद मेरे को ये dopamine hit मिल जाए. एक और like हो जाए तो फिर एक dopamine hit हो जाएगा. So we actually become chemically addicted to these dopamine hits. And the problem becomes then, it becomes really like any other chemical addiction. To alcohol, to drugs. We know that addictions to alcohol and drugs are hard to break, or to cigarettes, we were talking about that earlier. Not just because of the habit. It's not just haath mein glass, ya haath mein cigarette. It's actually that the nicotine in my brain, or the alcohol in my brain, or the drugs in my brain create such a change that the brain becomes addicted now to these chemicals. Mobile phone usage is now at that level because we are addicted to these hits of dopamine. So it's become a chemical addiction. और मैं सबसे ये advice दूं, ये challenge दूं, अपने को वो dopamine addiction से मुक्त हो जाओ. I'm not saying don't use your phones. मैं इतनी कह रही हूँ. Make sure in charge आप हैं. क्योंकि the makers of these apps, चाहे Facebook हो, Instagram हो, YouTube हो, Twitter हो, TikTok हो, चाहे कोई भी social media, चाहे अपनी email की inbox हो, they create all of these apps in such a way to make us want to keep checking. Why? Because there's money in it for them. The longer time that I spend checking my Facebook,
the more time I am seeing the advertisements that arise on Facebook, the longer time I am on YouTube watching videos, the more advertisements I see. These companies are making money. Their apps are free to us. Now you have to always ask yourself, if something is free, इसका मतलब है कि उनका पैसा कहीं और से आ रहे हैं, मेरे से तो पैसा नहीं ले रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहे हैं? ये multi-billionaires कैसे बनने जा रहे हैं? Advertisements. All of the advertisers are paying these apps to show their advertisements, and what they want is हमें केवल देखना है, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें. So they give us notifications in such a way. उनको मालूम होगा कि ये dopamine hit के लिए वो जरूर चेक करेंगे. Dopamine hit मिलते हुए I'm going to show them my advertisements. तो हमें स्वयं से ये पूछना है कि क्या मैं एक slave बनना चाहती हूँ, एक algorithm की? किसी ने एक mathematical equation लिखा. What is the way to get this person to stare at their screen for the longest ताकि ज़्यादा से ज़्यादा advertisements देख लेंगे? कोई algorithm लिखा था. Now we follow it, we do it. तो इसका मतलब क्या है? We have become simply slaves to an algorithm. We're talking about freedom, but we are slaves, literally. Slaves to an algorithm that someone else has written, some mathematical equation, जिसकी end result केवल इतना है that I should stare at that screen long enough to see the ads and to click here, click here. क्योंकि वो मेरे को ऐसे ads दिखाते हैं because they know you, they follow you, they know everything about you, and they are showing you advertisements exactly like you will want to see. So we have become slaves of these algorithms, slaves of our dopamine hits. तो अब मैं नहीं कह रही हूँ कि फ़ोन यूज़ मत करो, यूज़ करो, कोई बात नहीं, उपयोग करो उसको. It's a good tool, but use it as a tool rather than let it use you. And it's actually very simple, Neha. People think, oh my God, karun kya? It's very simple. Every app has notifications that you can turn on or off. अपनी मैं आपको मेरे personal strategies बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन है, मैं भी काम करती रहती हूँ फ़ोन के ऊपर, खासकर जब आश्रम से दूर हूँ तो करना है. Personal strategies, सारे notifications को बंद कर दो, खासकर अपनी social media वाले, कोई भी notification आना नहीं चाहिए आपके पास. अगर आपको कुछ चीज़ check करना, you can check it, app खोलो, you can see, but notifications नहीं आना चाहिए. Then WhatsApp में, because we also get stuck with WhatsApp all the time. WhatsApp, you have a lot of different options. जैसे सारे ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दो. अगर आपको देखना है कि किसी ने कोई ग्रुप में क्या पोस्ट किया, ठीक है, खोलो, ग्रुप में जाओ, but notifications बंद कर दो. Number 1. Number 2, there are ways in your phone to actually limit how many minutes every day you are allowed to spend on social media. Within the iPhone, and I'm not sure about Android, but I imagine it must have it as well, you can actually set time limits on all of your social media apps. 5 minute हो, 10 minute हो, 20 minute हो. आप plan करो, कितनी minutes a day do you want to spend? You program it in, उसके बाद वो आपको जाने नहीं देंगे उसी ऐप में. So it will stop it. There are ways of doing it. But we have to take charge. We have to stop acting like we are somehow victims of technology. सभी ये कहते हैं, करूँ क्या,
करूं क्या? ये करूं क्या कि नौबत ही क्यों आती है? अच्छा, शुरुआत में हम, भाई चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, हमने उसको फ़ोन दिया या तो हमने उसको फ्री हैंड छोड़ दिया कि ठीक है आप चलाओ, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल क्या करते हैं मैं आपको बताऊं कि उनको लगता है कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें उनको, इसीलिए सबसे पहले वो एक फ़ोन उनको दे देते हैं कि बेटा जाओ कार्टून नेटवर्क देखो, यूट्यूब पे राइम्स देखो, तुम अपना बिजी रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो कम से कम। तो बच्चा भी बेचारा लगा हुआ है आराम से 2-4 घंटे। तो क्या शुरुआती दौर ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं? आखिर ये करूं क्या की सिचुएशन क्यों आती है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पेरेंट्स को एक जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं, कोई ऐसे रूल नहीं है कि पैदा करना है। अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो do it with a mind that says I want to spend time with them. I want to be with them, plan things. I'm not saying never let them use the phone, but the phone is not your babysitter. Right. There's lots of research, actually, a lot of research about how these days with the technology and devices, our children's brains are being formed in ways that are not healthy. This is why we're seeing so much more ADD, ADHD, because our children's brains are being formed with things that move much faster than normal life. A video game is very fast, a TV commercial is very fast, social media scrolling very fast. A teacher with a chalkboard is very slow. Isliye these kids can't pay attention in class. Isliye they can't sit at a dinner table. Because real life moves too slowly for them. कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा करें तो उसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं वो शुरुआत अपने घर से ज़रूर करूँगी और इस एपिसोड को हर पेरेंट्स को अपने लोगों में सर्कुलेट करना चाहिए। ज़रूर वो लिंक शेयर करें। और हाँ, बिल्कुल सही कहा यहाँ पर साध्वी जी ने कि आज के वक्त में ना हम फ़ोन नहीं चला रहे, फ़ोन हमें चला रहा है। अब ये आदत आप जितनी जल्दी बदल देंगे ना, आपके बच्चे का, आप लोगों ने खुद ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोविड के वक्त में पता है क्या हुआ था, जो इतने इंटेलिजेंट थे ना बच्चे पढ़ने में, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई धीरे धीरे करके वो बच्चे भी पता चला कि पढ़ने से उनका मन भी हट गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये फ़ोन एक हद तक, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो एक हद में, एक लिमिट में कीजिए। ज़्यादा अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो वो आपके लिए घातक ही हो सकता है। टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, हम सिर्फ उसका उपयोग तब करें जब हमें उसकी ज़रूरत हो। खैर, आने वाले एपिसोड्स में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमसे जुड़ी हुई हैं, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। जय गंगे, जय श्री